स्टार्ट किया जाए. हाँ. Hello. Good afternoon, all of you. So, how are you all doing? All well? Good afternoon, Sweta. So now, today we'll be discussing your ANUBHAV 2, the CSAT question paper. We will be discussing CSAT question paper. अब discuss करेंगे. So I hope this paper you all would have found comparatively easier. Last time comparison में थोड़ा सा easy लगा होगा. Okay. Yes, Ram Kripal, Anjali, Aarti, Shikhar. Okay. So I think ये आपको पेपर comparatively easier लगा होगा in comparison to the last time. ठीक कोई नहीं. So Prashant, very good. So let's start the discussion. So now all of you here, we'll start with the first question. So Prabhas attempts a question paper that has 3 sections with 5 questions in each section. If Prabhas has to attempt any 5 questions, choosing at least 1 question from each section, then in how many ways can he attempt the paper? So how many ways can he attempt the paper? Ab dekho, now all of you, these are your common type of questions. So now here in this case, these are your common type of questions. So there are 3 sections, first section, second section and third section. Now each section contains your 5 questions. Okay. And he has to total attempt 5 questions. He has to total 5 questions, choosing at least 1 question from each section. So all of you, अब इस case में, if he has to attempt one question minimum from each section, so all of you, यहाँ पे अब सिर्फ 2 ही possibility रह जाती हैं regarding the number of questions which he can select. So आपको he can select number of questions. आपको either he can select first one from 2 sections and then 3 from the another section, or he can select, all of you, he can select 2 and 1 questions. Is it clear? So now he has the restriction. Ab restriction kya hai, all of you? Now the restriction with him is that he can select, ab dhyan se dekhna, he can select how many questions? He has to select 5 questions. I am just looking at you also. Okay. So now he has to select total 5 questions. So 1, 1, 3 or 2, 2, 1. अब देखो ये 1, 1, 3 and 2, 2, 1. In how many ways can this be arranged? ये आपस में कितने ways में आपको arrange हो सकता है? Now all of you simply here in this case remember ये concept है 1, 1, 3. So 3 things they can be arranged in how many ways? 3 factorial. But if there is repetition, then if repetition 1, 1 question repetition, so divided by 2 factorial. So 3 factorial by 2 factorial 3 ways. Similarly here 3 factorial and then 2 questions twice, so 3 ways. So 3 and 3 ways, all of you he can select. He can select 3 and 3 ways. Now all of you selecting 1 question and 3 questions. So now all of you selecting 1 question and 3 questions. So out of 5 questions he can select 5C1 way. Out of 5 questions he can select 5C1 ways.
out of 5 questions he can select 3 questions in 5C3 ways. So 5C1 into 5C1 into 5C3. This many ways he can select 1, 1 and 3 questions, and this can be arranged in how many ways? 3 ways. So you this thing plus, now you add this one, 1, 1, 3 and 2, 2, 1. So here out of 5 questions he can select 2 questions in how many ways? 5C2 into 5C2 into 5C1. And all of you, again this thing can be also arranged 2 to 1. We have just seen it can be arranged in how many ways? 3 ways. So 3 into 5C1, 3 into 5C1 into 5C1 into 5C3 plus 3 into 5C2 into 5C2 into 5C1. All of you, why we are placing here plus? You all know. What is the reason behind it? Either the event will be AND event or OR event. So AND event, this will be happening together. So we multiply here. But आप क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे तो 1, 1, 3 करोगे या फिर 2, 2, 1 करोगे. Either this thing will be happening or this thing will be happening. Therefore यहाँ पे बीच में आपका प्लस है. So you can take 3 common and you can do the calculation. So all of you, total number of ways you will get 2250. So total number of ways you will get 2250. So 3 into 5C1 into 5C1 into 5C3 plus 3 into 5C2 into 5C2 into 5C1. I hope it is common. 3 you can take further. Now here in this case, all of you, this is pure calculation based question. आपको ये pure calculation based question है. Niall, Barney and Sam have some amount of money. Niall gives half his amount to Barney, who then gives half of what he has to Sam. Sam gives what he has to Niall, who now has what he started with. If sum of Barney's initial amount and twice Sam's initial amount is rupees 51, what was the amount in rupees Niall started with? So all of you here in this case, yaad rakhna. Now Niall, Barney and Sam. Niall, Barney and Sam. So now here in this case, so all of you here in this case, Niall gives half, so let the amount of money be with them X, Y and Z. So Niall, Barney and Sam have this much amount of money. Niall gives half his amount to Barney. So Niall gives half his amount to Barney, so he will have X by 2. So now he will have X by 2 and then Barney will have how much amount? Your X by 2 plus Y. Who then gives half of what he has to Sam? Now he then gives what of half of what he has to Sam. So now here in this case, ab ye half of it he will be giving to Sam. So now he will be left with half, and then Sam will be having how much amount? Sam will have Z plus X by 4 plus Y by 2. X by 4 plus Y by 2. Now he will have this much sum. Is this clear to all? No one confusion? So now, all of you, now given Sam gives half of what he now has to Niall. So now Sam also gives half of what he has now to Niall. So now here in this case, half of it will be what? Z by 2, X by 8, Y by 4. So here in this case, Niall now will have what sum? He X by 2 plus Z by 2, Z by 2 plus all of you X by 8 plus Y by 4, and given now he is having how much sum? All of you. Now this is equal to what? ये किसके equal है? This is equal to the sum he started with. That is, initially he had rupees X. I hope it is clear to all now. So X by 2 plus X by 8, and here X is on this side. So now in this case, all of you,
send x by 2 as well as x by 8 on the other side. So z by 2 plus y by 4 equals to x minus x by 2 minus x by 8. So 8x minus 4x minus x, that is z by 2, this is 2, remember this is 2, plus y by 4 equals to 3x by 8. This we are getting. So now we have one equation, all of you. If sum of the Barney's initial amount and twice this Sam's initial amount is rupees 51. अब देखो, sum of Barney's initial amount, that is y, and twice Sam's of initial amount z, that is y plus 2z. Here y plus 2z, all of you, is equal to what? 51. Y plus 2z equals to 51. So now here in this case, all of you, if you want, you can take the LCM and you can solve it. So now here आप क्या कर सकते हो? You can take this LCM and then you can simplify it. So all of you simplifying it here. So now LCM 4. So 2z plus y, 2z plus y, 2z plus y upon 4 will be equal to 3x upon 8. So 3x equals to 2 into 2z plus y. 3x equals to 2 into 2z plus y. 3x equals to 2 into 2z plus y. Now all of you, 2z plus y, this value we already know. 2z plus y, that is equal to 51. So now 3x equals to 2 into 51, that is 3x equals to 102. 51 into 2, 102. So what was the amount Nile started with? So x will be equal to 102 by 3, that is 34. X will be equal to 34. I hope this is also clear, no confusion. So we can switch to the next question. So this is no, these type of questions definitely we are getting everywhere. हर साल हमें ये question एक आ रहा है. So now this question when we are getting, so all of you remember, यहाँ पे बस एक ही तरीका है कि express the question properly. एक्सप्रेस करना ईच एंड एवरी स्टेप, डोंट डू काइंड ऑफ एनी एरर. आप कोई भी गलती मत करना, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. So anyone will be having any doubt, just continue asking me also. Okay, and कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज आस्क मी इमीडिएटली. ऐसा नहीं है कि जस्ट टेक टू मच टाइम. अब देखो, नाउ ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, Z is a 2-digit number whose unit digit is non-zero and less than 4. So unit digit is non-zero and less than 4. Z is smaller than twice the number formed by interchanging the position of the digits. How many values can Z take? How many values can Z take? So Z is a 2-digit number. So all of you, if Z is a 2-digit number, so any 2-digit number, we can write it in the form of AB or XY. So I'm just writing in the form of AB. और ए बी जब पी क्यू लिख, ओके, 2-digit number where q is a non-zero and less than 4. So q is non-zero less than 4. It means q can be, possible values of q can be 1, 2 or 3. Possible values of q can be 1, 2 or 3. Janvi, in question number, previous question na, through options also it will take too much time. Through options also it will consume too much time, dear. कोई options के through उसमें shortcut नहीं होगा, because here in that case आपको we don't know the values of the other person ना, so options के through भी वो lengthy ही रहेगा, shortcut नहीं रहेगा उस केस में.
So q can be, and z is smaller than twice the number formed by interchanging the position of its digit. So आप interchange करते हो position of the digits, so number becomes q into p, number becomes qp. अब देखो number becomes qp here in this case. अब given z is smaller than twice the number formed by interchanging the position of the digits. अब जो new number form हो रहा है ना, all of you here, this will be lesser than interchanging the position of its digits. So suppose interchanging करने पे, interchange करने के बाद new number formed is called as x. So अब new number को we are calling it x. So pq हो गया and this is qp. अब देखो now all of you see here fast. What is the numerical value of any number? अब जैसे 73 है, so 73 का numerical value क्या होता है? This is 3 is the unit digit. So 3 being the unit digit is 3 into 1. 7 being the 10th digit, 7 into 10. Therefore overall number is what? 7 into 10 plus 3 into 1. Therefore if any number is pq, then what is its numerical value? 10p plus q. 10p plus q is the numerical value, and new number which is formed, that is qp. What will be the numerical value of this one? 10q plus p. Numerical value of this one will be 10q plus p. Is it clear now? Now in this case all of you given to us that here z is smaller than, that is numerical value, हमेशा याद रखना, 10p plus q is less than twice the number, that is 2 times 10q plus p. Or here in this case all of you, 10p plus q will be less than 20q plus p, 20q plus 2p. So 20q plus 2p, so sending p this side, q other side. So 8p will be less than 19q. 8p will be less than 19q. So 8p is less than 19q. अब देखो now all of you here in this case, अब ध्यान देना, 8p is less than 19q. 8p is less than 19q. So अब यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, that p is less than 19 upon 8q. P is less than 19 upon 8q. So all of you now see here fast. What were the possible values of q? What were the possible values of q? q की क्या क्या values possible थी? So now here in this case, p less than twice the value of q. So p less than twice the value of q, and then all of you अब यहाँ पे starting with q, if I take q as 1, if I take q as 1, so all of you here in this case, what can be the value? So now here what can be the possible values of p, because p is less than 2q. So all of you, if p is less than 2.3 times of q, it means definitely here the value of p, what are the possible values of p? 1 and 2 only. देखो 1 ही आपको twice of q से, that is 2 से less है. In fact ये 19 upon 8 ना 2 नहीं है, 2 point something रहेगा. आपको याद रखना, all of you please remember this is 2 point something. So 1 is less than 2 point something of 1 if q is 1, and if p will be 2, then definitely it will be less than आपको. So what are the possible values of p? The possible values of p will be, अब देखो जितने possible for q we have to find out how many values of p are possible, then only those numbers will be formed. If q equals to 2, if q equals to 2, then अब q की वैल्यू 2 हो गई, तो एक तरह से ये वैल्यू क्या आई 2.33, तो 2.33 इंटू 2 क्या हो गया आपका 4.66 अराउंड. अब 4.66 है तो ऑल ऑफ यू व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p? p के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? सो ऑल ऑफ यू अब q, दिस ओवरऑल वैल्यू बिकम्स,
आपको here in this case overall value becomes 4 point something, so possible values of p here can be p1 हो सकता है तब भी लेस रहेगा 4 point something से, p2 है तब भी लेस है, p3 है then also less, p4 also then also less. देखो एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग में इट वोंट टेक मच टाइम. इन एक्सप्लेनिंग इट इज टेकिंग टाइम बट इन solving it won't take much time. And then another possible value of q, what was the another possible value of q? Q ki another possible value is 3. So all of you, अब जैसे ही 3 होगा तो 2.33 into 3. So here in this case all of you अब ध्यान देना. Now here what can be, याद रखना ये 19 by 8 है, so 19 by 8 into 3, so 19 into 3 57 by 8. 57 by 8 क्या होता है आपको, 57 by 8 is 7 point something. So अब ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 7 point something. Q की वैल्यू आपको जैसे ही 3 लेंगे तो इट विल बिकम 7 point something. So अब 7 point something अगर ये टोटल वैल्यू हो गई, so all of you what can be the possible values for P here? 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी. I hope it is clear to all of you now. So this here 2 ways, here 4 ways, here 7 ways. So how many such numbers can be formed? 2 plus 4 plus 7, that is 13. 2 plus 4 plus 7, that is 13. I hope it is clear to all of you now. कोई confusion नहीं है. Very good, all of you. So let's move to the next question. Find the remainder of a number 67 digits divided by 5. So all of you here in this case, अब ध्यान से देखना, remainder of a number when it is divided by 5. तो simple concept क्या है? When you divide any number by 5, तो किसी भी number में whatever will be the unit digit of the number, जो भी unit digit होगा ना number का, you divide by 5, whatever remainder you get, that is the will be the overall remainder. जैसे for example, if the number is 638, so 638 if you divide by 5, what will be the remainder? 8 आप 5 से divide करो, what remainder you get? 3. So overall remainder will be 3. It means in this question find the remainder. This number it contains 67 digits है, याद रखना 67 digits. Digits are from 0 to 9 only. Digits आपके कितने होते हैं? Digits are from 0 to 9 only. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आपके 10 digits होते हैं. जैसे any word is formation of combination of alphabets ना आपको, वैसे ही any number is combination of your digits. So this number it contains total 67 digits. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10, 1, 0, 1, 1, 1, 2 like this. So 1 to 9, all of you, 1 to 9, each number contains 1 digit. 10 onwards, each number contains 2 digits. अब देखो, we have to, our target is to find out last digit. जैसे ही last digit आ गया अपने पास काम हो गया, because last digit 5 से divide करो remainder. So now all of you, out of 67 digits, 9 digits we are getting. 67 digits में से 9 digits we are getting. So 67 minus 9. Now remaining digits, all of you. अब how many digits are remaining now? 58 digits are remaining. अब 58 digits we are getting from where? 10. अब याद रखना 10, 11, 12, each number will give us 2 digits. We require 58 digits. So it means such type of how many 2-digit numbers will be required? 58 by 2, that is 29. So 29 2-digit numbers will give us 29 into 2, 58 digits. आपको 58 digits मिलेंगे.
So अब all of you we have to find out the last digit, 58th digit. So 58th digit आपका कौन सा होगा? 29th 2 digit number का आपको the next digit है, that is second digit, that will be the last digit. So here in this case what will be the 29th? So अब देखो कई बार यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं how to calculate. 10 is the first 2 digit number, 11 is the second 2 digit number, 12 is the third 2 digit number. सब याद रखना. 10 क्या है? 1 plus 9, 11 is 2 plus 9, 12 is 3 plus 9. यानी एक्चुअली आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 10 से. So 1 plus 9, 2 plus 9, 3 plus 9 and all. So here 10 is the first 2 digit number, 11 is the second, 12 is the third. So in this manner what will be the 29th 2 digit number? 29 plus 9, that is 38. यानी ये नंबर आपका ऐसे है ना, तो यहाँ से ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएगा ये? 36, 37, 38. So till 38 it will have total 67 digits. So अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आ गया? 8. 8 you divide by 5, whatever remainder you get overall that will be the remainder. Now next question आपका है, in how much time can a train cover a distance of 600 km if speed of train is 25% more than speed of a car and the speed of car is 20% more than the speed of a truck, which covers 640 km in 18 hours in which it takes 30-minute break after every 150 km. So 30-minute break after every 150 km if it is taking, and then truck, all of you, it covers total 640 km in 18 hours. So what will be the actual speed of the truck? अब speed of the truck find out करने के लिए we have to find out that actually it kind of traveled, ये कितनी देर travel किया था. So 150 km, every 150 km it is taking 30 minutes break, यानी after 150 km एक break, after 300 km second, after 450 km third, and after 600 km fourth, और फिर उसके बाद तो पहुंच ही गया. So it means how many breaks he is taking? This truck is taking, sorry. So break कितना लिया ट्रक ने? 4 breaks. So 4 breaks of 30 minutes. तो आप 4 break reduce कर दो, 30 minute into 4, that is 120 minute, 2 hours. It means what will be the speed of the truck while traveling? It would have covered 640 km in 18 minus 2, 16 hours. So 40 km per hour speed इसकी है. अब देखो speed of car is 20% more than speed of truck. So speed of car is 20% more than. So अब 40 20% क्या होगा? 40 10% 4, 20% 8, 40 plus 8, 48 km per hour. And then speed of, अब ट्रेन पे आ जाओ, ट्रेन है, ये ट्रक था, ये कार है. 25% मोर. अब 25% क्या होता है आपको? ऑल ऑफ यू, 25% इज 1/4. सो 48 का 1/4 इज 48 by 4, 12. So 48 plus 12, 48 plus 12 क्या है आपको? 60 km per hour. अब 60 km per hour स्पीड है, 600 km डिस्टेंस है. So what time it will take? Simply all of you, it will take 600 upon 60, 10 hours. So कितना टाइम लग गया? 10 hours में it will cover the distance. 10 hours में distance will be covered. तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था. तो याद रखना एग्जाम में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर. आपको इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं. प्रैक्टिस आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस करो. ये मत आज के समय में देखो, ये स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि आज के समय स्टूडेंट्स बहुत बड़ा मिथ हो गया ना कि हम वही क्वेश्चंस करने हैं ना जो डिफिकल्ट हो. अरे डियर, डिफिकल्ट हो क्वेश्चन या मॉडरेट हो या इजी हो, मार्क्स तो 2.5 ही रहेंगे. तो क्यों इतना भागना डिफिकल्ट 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 के चक्कर में? अरे एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है. हर टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहो. एटलीस्ट इंश्योर करना कि ये सब क्वेश्चन ना गलत ना हो एग्जाम में. यही हर्ट करेंगे. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, नहीं आएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये इजी या मॉडरेट जब नहीं करके आओगे ना तो बाद में पछताओगे कि अरे यार ये तो हो जाना चाहिए था, अरे ये कैसे नहीं हुआ. ये होता है, समझ गए ना. कभी भी कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता सीसैट, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दोज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस विच वी गेट. उनकी वजह से कभी ऐसा नहीं होता है.
here all of you find the missing number in the series. So missing number में अब देखो मिसिंग नंबर जनरली जैसे ही आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है सीरीज में, तो वी स्टार्ट विथ हर्षित कैलकुलेशन एरर मत करो डियर, कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, चेक योर कैलकुलेशन एरर अगेन। सब मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो अब जनरली अब देखो पहला हमेशा याद रखना ना, फर्स्ट वी ऑलवेज काइंड ऑफ नहीं होता, चेक द डिफरेंस। हियर डिफरेंस इज 4, हियर सॉरी हियर 16 एंड 17 डिफरेंस इज 1, 17 एंड 21 डिफरेंस इज 4, यहाँ डिफरेंस नहीं पता है। नाउ हियर इन दिस केस हियर आल्सो वी डोंट नो द डिफरेंस। 304 and 3429, 304 and 3429, all of you from 3429 you subtract 304, तब ये क्या आ जाएगा 3125, 3125। देखो now all of you here in this case ध्यान देना, देखो the moment you get 1 and 4 ना, आपके जैसे ही 1 and 4 आते हैं तो 1 and 4 में एक चीज क्लियर क्लिक करनी ही चाहिए कि 4 स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। 3125 देखो डियर 3125 तो आपको क्लिक करना मतलब नहीं होता, 5 से डिविजिबल है, तो ये क्लिक करना थोड़ा सा, अगर कैलकुलेशन आपके एक्यूमेंट बड़े स्ट्रांग है तो आपको इमीडिएटली क्लिक कर जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन पे अपने वर्कआउट करो आप लोग। जैसे 5 पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 टू द पावर 4 आपको क्या है 625, 5 टू द पावर 5 आपका क्या होता है, 5 टू द पावर 5 इज एक्चुअली योर 3125। तो ये अगर थोड़ा सा आपने आइडिया लगा होगा, आपने पहले कभी क्वेश्चंस किए होंगे कई बार प्रैक्टिस, तो आपको 3125 आपको ध्यान आ जाएगा, ये 5 टू द पावर 5 है। यहाँ पे 4 तो डेफिनेटली आपका 2 स्क्वायर है, 1 को हम अब ऐसे यहाँ पे ये 5th टर्म है, ये 2nd टर्म है, डिफरेंस मीन 2nd डिफरेंस है, ये 5th डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे इसको 1 टू द पावर 1, अब देखो पैटर्न इसमें गेस करना है, पैटर्न गेस किया इसके बाद स्टार्ट सॉल्विंग। सो नाउ इन दिस केस अब ये चेक करते हैं कि 3 क्यूब, अगर ये पैटर्न है 1 टू द पावर 1 2 स्क्वायर, सो 3 क्यूब, सो 3 क्यूब मींस व्हाट 27। सो अब 21 प्लस 27 आपका क्या होता है 48 होगा, सो 48। अब देखो इफ योर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपका करेक्ट है, so next here in this case next difference will be must be what 4 to the power 4। तो अब आपका assumed pattern करा जाएगा 4 to the power 4, आपका 4 to the power 4 4 16 64 4 to 256, yes 48 and 304, yes the difference is 256, बस हो गया 256। तो it means pattern correct है आपका, 48 will be the answer। So what will be the term here, 48 आपका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15, a piece of paper is folded and cut, आपको piece of paper fold किया गया है and cut as shown in the figure, how it will appear when opened। अब देखो एक चीज आप लोग ध्यान से सुनना, ये पेपर फोल्डिंग इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कई बार, यू डू गेट अ क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये है ना आप लोग ऑल ऑफ यू, हियर दिस इज अ पेपर, अब पेपर है ये ऐसे पहले आपने ऐसे फोल्ड किया, यू आर फोल्डिंग इट लाइक दिस, देन यू आर फोल्डिंग इट लाइक दिस, अब आपने ऐसे फोल्ड किया एंड देन कट किया आपने, ऑल ऑफ यू रिमेंबर कट किया हियर, कट यहाँ पे 3 कट्स हुए। अब देखो आप एक चीज याद रखो, कट करोगे तो आप लोग व्हाट यू विल बी डूइंग हियर इन दिस केस, ऑल ऑफ यू अब ध्यान देना, इफ सपोज आई एम मेकिंग 3 कट्स,
3 कट। अब जब ओपन करोगे ऑल ऑफ यू, जब ओपन करोगे तो एक चीज देखो, यही कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि अब ये जब होगा ना ये कट, तब याद रखना है शॉर्टकट क्या है, क्योंकि शॉर्टकट अभी बताएंगे। ये कट होगा तो सबसे जो नीचे बेस है, दैट बेस विल आल्सो बी हैविंग दिस कट। तो अब देखो ये ओपन किया, ये ओपन किया, तो इट मींस आपने जैसे ऊपर कट किया था एग्जैक्टली इन द सेम मैनर ये कट यहां पे भी रहेगा। तो इट मींस कि ये जो है ना आपका, ये दीज 3 सर्कल्स विच यू फाइंड हियर, तो व्हेन इट विल बी ओपन, जब ये ओपन होगा, देन ये 3 सर्कल्स इसमें बेस में यहां पे सेम जगह पे रहेंगे। तब 3 सर्कल्स इस फिगर में देखो ना, आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस, अरे ओनली इन ऑप्शन सी यू हैव 3 सर्कल्स एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। देखो कितना इजी हो गया, मारो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहां पे जो दिख रहा है वैसे ही ओपन करोगे तो नीचे भी वो कट वैसे ही रहेगा। बस हो गया क्वेश्चन नंबर। डायरेक्शंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 टू 17। आपको क्वेश्चन नंबर 16 टू 17, MNOPQ आर born in different years 1945, 51, 57, 1959, 1967. Ages are calculated on the base of year 2023. सब 2023 के बेस पे आपको कैलकुलेट हो रहा है। सब यहां पे जस्ट एक्सप्रेस इट, M 1945 N जो आजादी से पहले पैदा हो गया था, MNO 1957, P 1959, Q 1968 and R 1979. So here अब एज क्या होगा 2023 तक ऑल ऑफ यू। अब what will be the age of each person? अब 1945 में would have born, तब कितना हो जाएगा 80 हो गया और -2 78 ईयर्स ये हो गया, 78 ईयर्स हिज एज, ये 51 तो 49 प्लस 23, सो आपका क्या हो गया 72 ईयर्स। ये 6 ईयर्स लेटर पैदा हुआ तो 66 ईयर्स, ये 2 ईयर्स लेटर पैदा हुआ 64 ईयर्स। Here he is born 9 years later, so his age will be 9 years lesser, that is 55 years. 11 years later, so 11 years कम कर दो 44 years. Okay, age हो गया सबके। Now all of you here in this case consider the following information. Okay, person with vowel as his name has multiple of 11 as his age. So, अब आपको MNOPQR, so MNOPQR में एक ही है vowel O. Okay, so vowel as his name has multiple of 11 as his age, तो yes 66 years age है तो definitely. Q is younger than M, Q आपको younger than M है, yes definitely. Older than P, नहीं 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 नहीं, आपको P से भी यंगर है, सेकेंड रॉन्ग, फर्स्ट वन करेक्ट था। Q is older than P, Q is older than P by 6 years, no, this is also wrong. Difference between the ages of M and P is 4 years more than the difference of ages between Q and R. Q and R में डिफरेंस एज क्या है 11 years है, M and P में डिफरेंस एज है 14 years, so 11 है और 14 है, no. Age of P is 1.5 times that of N, age of P कहाँ से 1.5 times that of N होगा. Okay, so now here in this case, so all of you just remember these things. Who of the following could be P's son? All of you, who of the following could be P's son? So who of the following could be P's son, and then
who is the second youngest among the 6 persons? So now here in this case, so all of you with age, जो भी age था उसके accordingly you can just check question number 16th, second youngest MNOPQR में, तो second youngest तो आपको Q ही था, so definitely check कर लेना. So now all of you can just check and you can answer. I think this is easy one. Next question number 18th, all of you, question number 18th, there is a 2-digit number whose mirror image when the mirror is located to its north exceeds the number found by interchanging its digits by 45. Find the number. अब देखो now all of you here in this case, अब ध्यान से देखना, there is a 2-digit number whose mirror image when the mirror is located to its north exceeds the number found by interchanging its digit by 45. Find the number. You have to find the number. अब देखो here in these type of questions, all of you remember what is the best approach. Best approach is that number है आपको, जैसे number for example 11 है, mirror is placed here at the north, mirror is placed to the north, so all of you then it will look like same 11, आपको क्या रहेगा same 11, then here in this case it will look exactly same. So अब इसमें best approach all of you solve it through the options के through solve कर लो. So 83 है. So now here all of you in case of water image, देखो concept यहाँ पे जो है ना, आपको concept लगेगा water image का, mirror image when it is placed in north or south, तो आपको क्या हो जाएगा water image का concept लगेगा, that is main concept here is distance from the mirror remains same. So if distance from the mirror will remain same, ये yes, ये it will look exactly same, मतलब नहीं, it will look exactly same, because याद रखना mirror if it is placed north या south, north में या फिर south में, so all of you changes does not take place in among right and left, only up and down, change takes place only for up and down. So here in this case 83, yes, it will look exactly same, 80 will look exactly same. Now all of you here, अब is it exceeding the number found by interchanging the digits, interchange करने पे digit आपको क्या होगा 38, so 83, is it greater than 38 by 45? Yes, so here option A only becomes the answer. The average age of Nandini and Anand is 40 years. If Ankita replaces Nandini, the average age becomes 37 years, and if Ankita replaces Anand, then the average age becomes 43 years. If average age of Dhruv and Isan is half of the average age of Nandini, Anand and Ankita, then the average age of all the 5 people is, average age of all the 5 people is. अब देखो now here in this case all of you, Nandini and Anand average age is 40 years. So Nandini and Anand average age is 40 years. So we can say Nandini
plus Anand, total age will be 40 into 2, 80 years. If Ankita replaces Nandini, Ankita replaces Nandini, तो अब अंकिता जब नंदिनी को replace करती है, so now here in this case Ankita replaces Nandini, so all of you, average age becomes 37, so average age becomes 37, it means their total age will become what? 74. So here Ankita plus Anand, their age will be 74 years. If Ankita replaces Anand, the average age becomes 43 years, then it means Nandini plus Ankita, Nandini plus Ankita, ये याद रखना आनंद है, is 86 years. Okay. If average age of Dhruv and Ishan, average age of Dhruv and Ishan is half of the average age of Nandini, Anand and Ankita. So average age of Dhruv and Ishan, so Dhruv plus Ishan, average age will be what? Dhruv plus Ishan by 2. This is equal to, is half of the average age of Nandini, Anand and Ankita. Then the average age of all 5 people is. अब देखो all of you, अब यहाँ पे बड़ा simple है, आप लोग एक चीज कर देना, तीनों ऐड करोगे तो what we find, Ankita 2 times, Anand 2 times, Nandini 2 times, so twice their sum of the age, twice their sum of the age will be 80 plus 74 plus 86, actually 240 years, that is here 120 years. अब ये 120 years है, and then Dhruv and Ishan is half of the average age of Nandini, so इनका average age क्या है? 40 years है, so average age of their is half of the average age, so इनका average age क्या है? 20 years है. So all of you here in this case 120 years is their total age. Dhruv and Ishan average age is 20 years, it means their total age will be 40 years. So total age of all the 5 person becomes 120 plus 40, that is 160 years, and now number of person is 5, so 160 by 5, 32. So 160 by 5, 32. So let's proceed now. Now all of you, next question, see here. डियर 16-17 में जो प्रॉब्लम है वो चार्ट फिल कर दिए थे ना, उसके अकॉर्डिंग एज पता ही चल गए, डायरेक्ट कैलकुलेट करना डियर. एक्चुअली चार्ट एक पेज पे बनाए थे, फिर दूसरे पेज में तो बार बार मूव करना था, तो चार्ट बन गया, एज आ गई, उसके अकॉर्डिंगली तुम गेस कर लो किसकी एज है, क्या है. एनी क्वेश्चन यू कैन आंसर, एक बार एज पता चल गई, डिफरेंस के अकॉर्डिंग यू कैन गेस. डेफिनेटली वन हु इज एल्डर कैन नॉट बी सन एंड ऑल. डियर तो बस वो चार्ट देख लेना, जो चार्ट मैंने बनाया था उस चार्ट से फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना. राजधानी एक्सप्रेस having length 135 meter and Vande Bharat having length 145 meter are moving in opposite direction. They enter into a tunnel which has length equal to the sum of the length of both the trains. Trains meet each other after 14 seconds of entering in the tunnel. They have their speeds in the ratio of 7:3. What will be the status of Rajdhani Express with respect to its tunnel entrance when it meets Vande Bharat Express? So now here all of you in this case, अब देखो ratio of their speed is 7:3 ना, so ratio of their speed is 7:3. Rajdhani Express length is 135 meter, Vande Bharat length is 145 meter. So their total length will be what? Your 280 meter. So आपका their total length is 280 meter.
I will take question number 16th. So here I'll take it later dear, don't worry, अभी बता देंगे आपको. So here Rajat, so their length is sum of the length 135 meter plus 145 meter, that is 280 meter. Trains meet each other after 14 seconds of entering in the tunnel. So now here in this case, speed of the tunnel. Now here in this case, if they are crossing, अब ध्यान देना. Now all of you, tunnel की ये suppose ये length है tunnel की, ठीक? One train is starting from this side. गोलू हिंदी में अगर डियर बोल दिया करो तो I will just नहीं होता, tell in Hindi as well. सब ये suppose tunnel है. So now one train is entering from this side, another train is entering from this side. So अब इस case में together both the trains would be covering the length of 280 meter. अब ध्यान से देखना, if together both the trains would be covering the length of 280 meter. So अब याद रखना, when one train is coming from this side, another train is coming from this side, when they will be meeting each other, जैसे ही वो एक दूसरे से मिलेंगे, so together they would have covered, all of you, what distance? Together they would have covered the distance of 280 meter. याद रखना 280 meter, and 280 meter they are covering in what time? 40 seconds. It means all of you, what is their relative speed? Because since both are moving and moving in opposite direction, so 280 meter they are covering in 14 seconds. So what is their relative speed? 20 meter per second. Relative speed is 20 meter per second. I hope it is clear to all now. So relative speed है आपको 20 meter per second. Ratio of their speed is 7:3. So if ratio of their speed is 7:3, then in this case together all of you, their speed is 20 meter per second and ratio of their speed is 7:3. It means speed of Rajdhani train will be 14 meter per second and speed of Vande Bharat will be 6 meter per second. What will be the status of Rajdhani Express with respect to its tunnel entrance when it meets the Vande Bharat Express? So now all of you, here in this case 14 meter per second is the speed and it is meeting after 14 seconds. So it means what distance your Rajdhani Express would have covered? 14 meter per second speed पे 14 seconds में, all of you, it will cover what distance? 196 meter. So 196 meter. So now all of you, here in this case, what will be the status of Rajdhani Express with respect to its tunnel entrance when it meets Vande Bharat Express? अब ध्यान देना, ये ट्रेन, ऑल ऑफ यू, ट्रेन का लेंथ क्या है? 135 मीटर है. ट्रेन की लेंथ आपका है 135 मीटर ओनली. ट्रेन लेंथ इज 135 मीटर एंड ये आपको एंटर कर रही है. ट्रेन लेंथ इज 135 मीटर, ये आपको एंटर कर रही है. हाँ गोलू, आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो अब जैसे ही ये एंटर करेगी, so now here it is covering total distance of 196 meter. ये 196 meter आगे आपको चली गई. 196 meter it has covered. So length इसकी है 135 meter. तो यानी कि टनल में एंटर करने के बाद all of you, it has moved ahead. So now here in this case it means in tunnel how much it has entered. So here 196 meter minus 135 meter, that is 61 meter. That is 61 meter. So it is fully inside the tunnel and all of you, अब ये सब जितने भी नंबर थे ना, 61 मीटर, 135 मीटर, अब यहीं पे न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग हो. 3/8 of राजधानी एक्सप्रेस इज स्टिल आउटसाइड द टनल. नो, राजधानी एक्सप्रेस टनल के अंदर तक जा चुकी है. It is fully inside the tunnel. हाँ, सेकेंड वन तो सही है, fully inside the tunnel है, because 196 मीटर गई है, 135 मीटर था अंदर, and the gap is approximately 45% its length from the entrance of the tunnel.
अब गैप कितना है, जब एंटर करने के बाद 135 मीटर था, बाद में कितना बचा था, यस ये 61 मीटर गैप बचा। तो ये 61 मीटर, ऑल ऑफ यू हियर इन दिस केस, is it around 45% of the length of the train? So 61 upon 135 into 100%, so we get yes approximately 45%. So answer will be what? Option B. Answer will be option B. I hope it is clear to all now. Now all of you remember question number 16, 17 में ना, here in this case you have to fill it accordingly. ये जो था ना, इसके accordingly you have to fill it. So we'll take it later. This is clear. Certain language here is coded as 825118 and right is coded as 1881165. Then how will race be coded in that language? Simran, that answer will be 60 days. That answer will be 60 days. I will tell you that logic in the end. And may you ask me, I will tell you the logic. Here is coded as 825118. So all of you, here is coded as 825118. 825. अब एक्चुअली ये क्या है, 825118. Actually here this is just the position. H position is 8th from the left hand. E is 5, 5th position, so 5 is square. A is 1, so 1 is square. R is 18, 18, so here 8. Just cross check. Next, right is coded as, right is coded as, R is what, 18. I, all of you here, I is coded as, here first is 18, next I is 9th, so it is coded as 81. याद रखना 81 है ये. D is 4th, 16, and E is 5th, so 5. So what will be the code for race? Race code will be what? Race का code क्या होगा? RACE. Race code is, here in this case, R will be 18 only, A will be 1, C है 3, 9, and E 5. So 18195. So answer is simple, 18195. Is this clear to all of you now? Now divide 200 into 4 parts which are in arithmetic progression such that product of the second and third part is 72 more than the product. अब देखो, whenever there are given 4 terms like this, even number of terms, then you take the terms as a minus 3d, a minus d, a plus d, and a plus 2d. Sorry, a plus 3d. You take these as the terms. आप इनको terms लोगे, divide 200 into 4 parts. So a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. Product of the second part and third part is 72 more than the product of the other 2 parts. So now here in this case, their sum will become what? 4a will be equal to 200, a is equal to 50. A की value 50 आ गई, definitely A की value will be 50. And what else is given? The product of the second and third part is, so product of second and third part is
72 more than the product of the other two parts. So their product will be what? A square, A minus B into A plus A minus D into A plus D, A square minus D square, and this is A square minus 9D square, all of you. Here in this case given this is 72 more, so this one is 72 plus this one, so ये cancel कर दो, 8D square equals to 72, so D equals to what? Plus minus 3. So D equals to plus minus 3. Is it clear? अब देखो, now all of you, D will be equal to plus minus 3, then what will be the numbers? A minus D, so that is 50 minus 3. आपको कभी भी plus minus लोगे, both side it will get. So 50 minus 3, 47, ये 44 हो गया. This one is your 53 and this one becomes 56. 41, 47, 53 and 59. So A minus 3D, A minus D. What is the least natural number which when divided by 7 and 11 leaves remainder of 5 and 7 respectively? So now all of you, this is one of the easiest question. Here 7 से divide करने पे remainder 5, 11 से divide करने पे remainder 7. So all of you, now here in this question solve it through the options. Best way है solve it through the options. Options के through solve करो. ऑप्शन ए है 29, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आएगा, 7 into 4 28, नो. ऑप्शन बी 33, 7 से डिवाइड करने पे यस, 7 into 4 28, रिमाइंडर 33, बट 11 से डिवाइड करने पे इट इज परफेक्टली डिविजिबल, लीव इट. ऑप्शन सी 40, 7 से डिवाइड करने पे 7 into 5 35, यस, रिमाइंडर इज 5. 11 से डिवाइड करने पे 11 into 3 33, यस, रिमाइंडर इज 7. Now all of you here, next questions number 28 29. Question number 28 29. B is thrice of A's age. B equals to 3A. D is half of A's age. So A equals to what? 2D. D's age is twice of C's age. So D equals to 2C. B's age is 1/3 of E's age. B's age is, so E will be equal to what? 3B. So E equals to 3B. So now here in this case, who seems to be smaller? यानी कि smaller आपको C लग रहा है, तो आप C की एज मान लो X. Then D will be what? 2X. D is half of A, that is A is twice, so A will be equal to what? 4X. And then B is thrice of A, so B will be equal to what? 12X. Which among them is eldest? Your 12X. And B's age is 1/3 of E's age, so E will be what? Thrice of B, that is E will be equal to 12 into 3 36X. So CX, so D 2X, A 4X, B 12X and E 36X. Youngest you can easily find out. Now in this case all of you, here what is the pattern basically? 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 4 है, 6, and here these numbers are large. So now in this case definitely it is related, it has something to do with squares and cubes. So यहाँ पे 4 cube is what?
4 cube 64 minus 2 square, that is 4 60. 5 cube, that is 125 minus 3 square, that is 9 116. So here in this case 6 cube, that is 216 minus 4 square, that is 16. So 216 minus 16, so 200. Since I have solved few questions, अरे हाँ, all of you now, ये what I did, I just kind of नहीं होता है कि here in this case I just checked what I have done while expressing it. I expressed it in the wrong manner. अब गलती से गलत मैनर में जस्ट सीक्वेंस में नहीं होता है, जल्दीबाजी मैंने कहा कि ये बड़ा इजी है तो MNOPQR वो इसी सीक्वेंस में मैंने चार्ट बना दिया था, वो रॉन्ग है. सो एज ऑफ 1945, ये एज आप 1945 वाले पर्सन 1945 वाले पर्सन की एज है 78 इयर्स. 1951 एज पर्सन इज 72 इयर्स. 1957 person age is 66 years. 1959 person 64 years. 1968 person is 55 years, and 1979 that person age is your 44 years. So ये था person with vowel as his name has multiple of 11 as his age. So multiple of 11 आपको या तो 66 है, 55 and 44 है, has multiple of 11 as his age. So these were the kind of नहीं होता आपको possibilities through which you had to check. Q is given younger than M and older than P. So Q younger than M था and older than P है. Q is older than P by 6 years. ये gap है आपका 6 years का. So ये gap है 6 years का. So gap of 6 years. So it can be 72, 66 or 78, 72. All of you. Now next given difference between the ages of M and P is 4 years more than the difference between the ages of Q and R. So Q and R के बीच में whatever is the age difference, M and P age difference is what? M and P age difference is 4 years more than it. 4 years more than it. ये इसके बेस पे ही you have to fill it. M, N, O, P, Q and R. Age of P is 1.5 times that of age of N. 1.5 times that of age of N. So 1.5 times यहाँ पे क्या possibility हो रही है? So all of you 1.5 times के लिए तो यही possibility है आपको 44 and 66. Now 44 and 66 also only आपको 1.5 times में आएगा. So now directly 1979 will be the age of N. 1957 will be the age of P. And then vowel वाला 11 multiple of 11. So O हो गया यहाँ पे. P and Q difference is 6 years. So अब definitely आपको Q यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि नीचे आपको difference है नहीं. Q is less than M तो आपको definitely यहाँ पे M आ गया. So M, Q, P, O, N. So all of you who is remaining, M हो गया, N हो गया, O हो गया, P हो गया, Q हो गया, definitely another person remaining is R. So now all of you, I hope it is clear. M, Q, P, R, O, N. M, Q, P, R, O, N. I hope it is clear now. So on this basis this chart is clear. वो आपको ये सही sequence M, Q, P, R, O, N. So अब check कर लेना. Now all of you here in this case given A invested 1/3 of the capital for 1/5 of the time. B invested 1/4 of the capital for 1/6 of the time.
and C invested rest of the capital for rest of the time. Find the share of the B out of a total profit. अब देखो now all of you here in this case easy क्या है? For easy calculation we will take the sum as the multiple of 1 by 3 and 1 by 4. So ये 3 डिनोमिनेटर में ना यहाँ पे 4 है. So आपको कैपिटल हम ले लेते हैं सपोज 12x. So A invested 1 by 3 of it. It means A invested 4x. B invested 1 by 4 of the capital. So 1 by 4 of the capital. So 1 by 4 of 12x is what? 3x. C invested rest of the capital. So 12x में से rest will be what? Your 5x. And time आपको 1 by 5, 1 by 6. 5 and 6 LCM is what? 30y. So suppose 30y, I am taking the total time period. So A invested for 1 by 5 of the time. That is 6y. B invested for 1 by 6 of the time. So B invested for 1 by 6 of the time. That is 5y. So C invested for the remaining time. That is 19y. C invested for the remaining time. That is 19y. So all of you, what will be the ratio of their investment? Ratio of their investment हमेशा याद रखना, real investment आपको किस पे डिपेंड करता है? Sum invested as well as time period for which it is invested. जितना sum invest कर रहे हो, जितने time period के लिए invest कर रहे हो, उस दोनों पे डिपेंड करता है. So all of you, 4x into 6y is to 3x into 5y is to 5x into 19y. ये xy cancel हो गए. 24 is to 15 is to 95. 24 is to 15 is to 95. So now all of you, so अब जैसे अब solve कर लेना, you will get it. Now whatever ratio, now here in this case this ratio you can calculate, you will get. Picture blurred नहीं है dear, picture clear है. UPSC IAS जो भी हो आप, पिक्चर क्लियर है डियर, क्योंकि आई कैन ऑल्सो सी दी इमेज ना. देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये बार बार हम देखते हैं स्क्रीन पे ही देखते रहते हैं कि क्लैरिटी है ना, विजिबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है डिजिट्स की, तो देखते हैं तो समझ में आ जाता है. सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर, हाँ क्लैरिटी है. Six person KLM, JKLMNO sit around a triangular table. Inside the center while rest seat in the middle of the edge facing outside the center. तो एक तरह से triangular arrangement है. यहाँ पे sit कर रहे हैं और they are sitting in the middle. Okay, facing outside the center. यहाँ पे facing outside है. All of you remember, this is facing inside. Facing inside. अब देखो याद रखना, facing inside left right will be different. Facing outside left right will be different. हमेशा याद रखना. Now here in this case, so J sits second to the left of the M, N sits second to the right of O, two persons sit between K and L, N sits second to the left of L and faces outside the center. Faces, N sits second to the left of L and faces outside the center. Second to the left. अब देखो now here in this case, अब हमेशा आप इसी से start करोगे. ये facing outside के लिए, facing outside के लिए this one will be left, ये right होगा, और facing inside के लिए this one will be left and this one will be right. ये याद रखना. So now here in this case, अब N sits second to the left of L and faces outside. अब जैसे ही ये clear है ना, so all of you here in this case,
L will be here. L sits second to the left of, नहीं तो अब यहाँ पे कर देते हैं, here N sits second to the left of L and faces outside the center. So N sits second to the left of L. Now again N sits second to the right of O. So N sits second to the right of O. So definitely O will be here. O outside a second to the right of O. J sits second to the left of M. J sits second to the left of M. Two persons sit between K and L. Two persons sits between K and L. So if two persons sits between K and L, it means definitely K would be sitting here at this place, because two persons sitting between K and L, so K is not adjacent. J sits second to the left of M. अब J sits second to the left of M, ये inside face करके बैठ रहे हैं. So all of you, J sits second to the left of M, so M will be here. Remember, M will be here and J will be here, because they are facing, so this one will be left. So M is here, J is here. All of you just see it. So this is the arrangement. अब now with this arrangement you can answer the question. सिमरन लास्ट में याद दिला देना क्वेश्चन. Okay. A tank has two old inlets which can fill it in 24 hours and 120 by 7 hours respectively. A new outlet was recently installed whose rate is unknown. Brahma opened the pipes to fill the empty tank. Since he was new, he had not noticed the newly installed outlet which was open. After some time, he closed the old inlets at a time when the tank would be normally full. From that time, it was observed that the tank got emptied due to new outlet being open in 2.5 hours. Now here in this case, answer the following questions. Okay. So now you have to answer the following questions. Find the capacity of newly installed outlet. So question all of you. Now here a tank has two old inlets. Now here all of you अब याद रखना, find the capacity of newly installed outlet. Tank has two old inlets which can fill it in 24 hours. Okay. So just here in this case 24 hours में और 120 by 7 hours. Okay. So now here in this case all of you, so now you assume the capacity. सबसे अच्छा रहेगा ना कि you assume the capacity and then with respect to capacity the question becomes easier. So 24 है 120 है, so 24 and 120 दोनों से divisible. So all of you take the capacity as suppose 120 liter. So 120 liter, then all of you, it first tank it can fill it in 24 hours. So what will be the speed? What will be the speed of first one? 120 liter upon 5 upon 24 hours.
that is 5 liter per hour, and second one 120 liter upon 120 by 7, that is 7 liter per hour. Now if together they are opened, so together they are opened, so they will be filling 12 liter per hour. They will be filling 12 liter in 1 hour, all of you. I hope it is clear. So 12 liter per hour would be together. Opened the pipes to fill the empty. Since he was new, he had not noticed the newly installed outlet which was open. So suppose that open, it was emptying of X liter of water per hour. It was emptying X liter of water per hour. So 120 minus X, 12 minus X liter per hour. Okay. So 12 minus X per hour, all of you. अब नॉर्मली इसको कितना टाइम लगता है? 12 लीटर पर आवर पे टुगेदर दे वुड बी फिलिंग इट इन व्हाट टाइम? 120 लीटर कैपेसिटी है, सो इन 10 आवर्स दे वुड बी फिलिंग इट 12 लीटर पर आवर पे. नाउ हियर ऑल ऑफ यू ध्यान देना. नाउ गिवन ओपन द पाइप्स न्यू आफ्टर क्लोज द ओल्ड इनलेट व्हेन द टैंक वुड बी नॉर्मली फुल. सो 10 आवर्स में आपको नॉर्मली फुल हो जाता है. सो 10 आवर्स में नॉर्मली फुल हो जाता, तो 10 आवर्स में 120 liter it would be filling, but from that time it was observed that the tank got emptied due to new outlet in 2.5 hours. अब ये 2.5 hours में क्या हो गया? आपको ये empty हो गया. So 2.5 hours में all of you how much it would have in 10 hours? अब ध्यान देना, 10 hours में it would have, if in 1 hour it can empty X, then in 10 hours if in 1 hour it is filling X liters, then in 10 hours 10x, then 2.5 hours में 2.5 hours में how much it would be emptying? 2.5x. so अब ये 10 plus 2.5x total ये कितना empty कर रहा है? 12.5x. so 12.5x must be equal to your 120. 12.5x must be equal to 120. So here 12.5x, so 120 upon 12.5, so you get 9.6. Is it clear to all of you? Anyone any question? किसी को कोई question है? Please ask me fast. Yes dear, इस क्वेश्चन में ना सपोज करने पे ही वी कैन गेट हियर इन दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ना आप सपोज करने पे ही वी कैन गेट. हियर इन क्वेश्चन नंबर 34 डेफिनेटली नहीं होता है. आपको ये कैपेसिटी एग्जैक्ट कैपेसिटी देनी चाहिए थी. दे वुड यानी कि क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एग्जैक्ट कैपेसिटी शुड हैव बीन मेंशन्ड. आपको एग्जैक्ट कैपेसिटी मेंशन करना करते तो ये इजी रहता. सो ऑल ऑफ यू हियर यहाँ पे ध्यान रखना. यस, ये एग्जैक्ट कैपेसिटी या क्वेश्चन नंबर 34 के लिए एग्जैक्ट कैपेसिटी शुड हैव बीन मेंशन्ड.
ये एग्जैक्ट कैपेसिटी मेंशन नहीं है. So yes, all of you ये ध्यान रखना, yes exact capacity is not mentioned here. So आप assume करोगे तो then only you can get, comparatively आप calculation करोगे तो get you can get. देखो सेम रिलेशन रहेगा, सेम रहेगा, इन द सेम मैनर यू विल गेट, हमेशा याद रखना, इन द सेम मैनर यू विल गेट. I hope it is clear to all now. Many students had confusion, they have asked this question to me, तो let me make it clear कि यहाँ पे आप देखो easily, जैसे आप अज्यूम करते हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 120 हमने 120 इसलिए अज्यूम किया कि 24 और 120 दोनों से आपका ये डिविजिबल होता, कैलकुलेशन इजी होता, देयरफॉर आई अज्यूम्ड 120. क्लास में भी आई ऑलवेज आस्क द स्टूडेंट्स कि आपको कभी भी व्हेनेवर यू हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस तो आप हमेशा यू टेक द नंबर विच इज डिविजिबल. सो देयरफॉर वी डिड. सो 120 आपको इसीलिए किया था. ओके सो 120 आपको, तो 120 सिंपली याद रखना, रेट फर्स्ट का फाइंड आउट करना 5 लीटर, सेकंड का 7 लीटर, टुगेदर 12 लीटर. सो 120 में 10 आवर्स, सो 10 आवर्स में उसकी कैपेसिटी बस इतना ले लो कि x लीटर पर आवर. सो 10 आवर्स में वो कितना एम्प्टी करेगा 10x, और फिर नेक्स्ट 2.5 आवर्स में भी वो एम्प्टी करता है जितना ये फिल किया था. तो इन्होंने 10 आवर्स में कितना फिल किया 120 लीटर, और वो टोटल 10 आवर्स तो साथ में था एंड 2.5 आवर्स अकेले भी था, तो 10 प्लस 2.5 दैट इज 12.5 आवर्स. 12.5 आवर्स में एम्प्टी कर रहा 120 लीटर. सो रेट क्या हो जाएगा इसका से? अब यू कैन आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. Select the correct combination of mathematical science to replace star science and balance the given equation. So all of you यहाँ पे here in this case ये आपका सिंपल, आपको बॉडमास रूल याद रखना कि बॉडमास रूल डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई. तो इस केस में बॉडमास रूल जरूर अप्लाई करना, ऐसा नहीं है कि बॉडमास रूल अप्लाई मत करना. सो इसमें बेस्ट है इमीडिएटली डोंट थिंक, डायरेक्टली आप क्या करो, जस्ट प्लेस दी सिंबल्स एंड देन solve it, do the calculation. So no need to discuss this question. Now next question number 37th. In each of the questions below some statements are given followed by some conclusions numbered. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. Read all the conclusions, decide which of the following logically follows from the given statement. No pink is yellow, some orange is yellow, some grey are pink. So now here no pink is yellow. Now if given no pink is yellow, so pink and yellow will be definitely आपको separate रहेंगे. ये pink है, ये yellow है. Some orange is yellow, some orange is yellow, some orange is yellow, ये orange कर दिया अभी suppose. Some grey are pink, some grey are pink, some grey are pink. All grey is orange is a possibility. अब देखो now all of you, we know that there is some common area between grey and pink. There is some common area between orange and yellow. Okay. Now all grey is orange is a possibility. अब देखो possibility की बात कर रहा है, यहाँ पे ये definite की बात नहीं कर रहा है. Now all of you remember it is talking about the possibility. So अब यहाँ पे all of you ये grey, अब ध्यान से देखना. Now here you can have pink because pink and yellow में restriction है. You can have pink here. This is pink, and then you can have yellow. You can have gray like this also. देखो whenever it is asking possibility, it means it is asking for probable chances. Definite की बात नहीं कर रहा है. It is asking for definite probability chances. So can we have gray like this within the orange? So all gray
is orange, yes, definitely it is possible. All gray is orange, definitely it is possible. Because no pink is yellow, pink यहाँ पे है, yellow यहाँ पे, still we can have. Some gray are not yellow. Some gray are not yellow is a possibility. Now in this figure we are having some gray are not yellow is a possibility. Now all of you, some gray are not yellow, is it possible? Now हमेशा याद रखना all of you, some gray are not yellow ये possibility नहीं है, ये definite है. Some gray are not yellow, this is not possibility. ध्यान से देना, all of you please be cautious. Here in this case अब ध्यान से एकदम listen carefully. There will be always common area between gray and pink. Now this common area which is between gray and pink, this cannot enter into the territory of yellow. So there will be always, ये area हमेशा ऐसा रहेगा which will be outside the territory of yellow. तो ये possibility नहीं है, ये definite है. ये possibility नहीं है, ये definite है, definite. कि आपको ये possibility नहीं है, ये definite है कि some gray are not yellow. So some gray which are pink, because those gray which are pink will definitely never be yellow. तो आपको क्या है, ये definite है, ये possibility नहीं है, आपको ये definite है. Statement followed by two conclusions numbered 1 and 2. Now all of you here you have to find out. So question number 38 and 39, here in this question, together government has spoiled many top ranking financial institutions by appointing bureaucrats as directors of these institutions. Conclusions: government should appoint directors of the financial institutions taking into consideration the expertise of area person in the area of finance. Financial institutes, director of financial institutes should have expertise commensurate with the financial work carried out by the institute. So यहाँ पे conclusions है definitely. तो यहाँ पे first and second both, क्योंकि financial area से expertise from financial area. Question number 39. How many employees of Bank Z opted for VRS? Statement first. 18% of 950 officer cadre employees and 6% of the 1100 other cadre employees opted for the VRS. So how many employees of Bank Z? So 18% of 950 officer cadre employees and 6% of the 1100 other cadre employees, okay, opted for VRS. Second, 28% of the employees in the age group of 51 to 56 and 17% of the employees in all the other age groups opted for VRS. Now here in this case all of you we have to check data sufficiency. So अब देखो, अब इस केस में 18% of the 950 officer cadre भी given है and 6% of the 1100 other cadre employees. So अब officer cadre या फिर other cadre, यही तो combination होता है. So now here in this case definitely या तो officer होंगे या non officer होंगे. So 18% of 950 plus 6% of 1100, this numerical value, because it is asking us the numerical value, you can calculate. Second है 28% of the employees in this age group and 17% of the employees in all the other age groups opted.
अब कितना नंबर क्या है, इन सेकंड वन नंबर इज नॉट गिवन, सो सेकंड अलोन नॉट सफिशिएंट, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, तो आंसर फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट. Now all of you, next question number 40 is very easy. When a 3-digit number 786 is added to another 3-digit number 6m1, we get 13n7 which is divisible by 11. अब देखो नो कैरी, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है. Find the value of m plus n. अब now here divisibility rule क्या है आपको, divisibility rule है 7 plus 3 10. So here n plus 1 must be also 10, so n must be equal to what, 9. So m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 8 plus 1 9, so m plus 1 plus 9 10 हो गया. Find the number of pairs of two natural numbers having product 5400 and HCF 30. आपको pairs find out कर रहे हैं. How many pairs are there? Okay, here in this case all of you, two natural numbers having product 5400 and HCF है 30 है. अब देखो हमेशा एक चीज याद रखो. Now all of you, if 30 is their HCF, if 30 is their HCF, both the numbers will be divisible by HCF. It means HCF 30 will be the factor. So directly अब यहाँ पे numbers को ही हम ले सकते हैं 30A and 30B. Numbers we can take it as 30A and 30B. So 30A into 30B, 30A into 30B, 30 will be definitely one of the factors of both the numbers, is equal to 5400. A into B equals to what, 6. So A into B equals to 6. So all of you, A into B equals to 6 में अब क्या हो सकता है, A into B equals to 6 में 1 into 6 equals to 6. Okay. 2 into 3 equals to 6. 3 into 2 equals to 6. So अब देखो here all of you, in this case अब whatever numbers you take, so here पेयर में हमेशा ना एक ही चीज देखते हैं. नाउ पेयर में all of you 2 into 3, so here in this case a की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, b की वैल्यू 3. so one of the number यहाँ पे 30 into 2 60, other is 90. so अब 60 90 1 पेयर हो गया तो हो गया. अब 60 90 90 60 अदर पेयर नहीं होगा. so 1 into 6 2 into 3, this में only we can break. so all of you, how many we are getting, so आपको only possibility है 30 and then 30 into 6 180 and other pair क्या हो जाएगा 30 into 2 60 and 30 into 3 90. बस यही हो गया. Is it clear to all? So now here A into B आपको 6, यही possibilities है बस. How many of the following numbers are divisible by 132? How many of the following numbers are divisible by 132? अब देखिए this is easy question. 132 divisibility rule will be what? 132 is 12 into 11. So number has to be divisible by 11, 12. That is number has to be divisible by 3 as well as 4. So you apply the divisibility rule of 3, divisibility rule of 4 and 11. 3 का apply कीजिए, 4 का apply कीजिए, 11 का apply कीजिए. So divisibility rule for 4 last 2 digits. तो ये भी गया, ये भी गया. Last 2 digits में these 3 qualifying. अब 9 to 11 7 18 ये qualify कर रहा है. 9 plus 2 7 7 plus 2 9 plus 9 18, तो 3 से भी divisible है और difference 0 है. So this one will be there. अब ये 5 8 4 12 1 13 4 17, तो ये आपका 3 से divisible नहीं है, gone. Here आपको no, it is not divisible by 11, so this is also gone. So आपको only one number 792 is divisible. What is the minimum number of equal weight pieces
that can be obtained when dividing 4 cakes which were purchased for a birthday party, weighing 6 1 by 8 kg, 8 whole 3 by 4 kg, 10 whole 1 by 2 kg and 3 whole 15 by 16 kg. So ye all of them are mixed fraction, just convert in improper fraction. So 49 by 8 kg, (35 by 4 kg), 21 by 2 kg and 63 by 16 kg. All of you here in this case. अब minimum number of equal weight pieces. अब देखो, if you want the number of pieces to be minimum, then definitely the size of the pieces must be as large as possible. So size of the pieces must be as large as possible. So definitely size of the pieces must be what? The HCF of these cakes. So HCF होना चाहिए. तो HCF is HCF of numerator 49, 35, 21 and 63. All of you, what will be their HCF? 7 into 9, 7 into 3, 7 into 5, 7 into 7. So 7 upon LCM of their denominator. So 8, 4, 2 and 16. So their LCM is what? 16. So HCF of any fraction is HCF of numerator upon LCM of denominator. So now all of you, ये HCF है, it means this will be the size of each cake. हर एक cake का size क्या होगा? This one will be the size of each cake. So now if this one is the size of each cake, then इनको sum करो आप. That will be the total quantity of cake and divide by their HCF. Divide by their HCF. तो ये divide कर लेना. इनको sum करके divide कर लेना all of you. अब ये तो 16 हो जाएगा. तो 98 प्लस 4 into 4 that is 140 plus 21 into 8 168 plus 63 divided by 7 कर देना all of you. Divided by 7. तो क्या हो जाएगा आपको? 14 plus 10 plus 24 plus 9. Sorry, 140 you divide by 7, you get 20. So 34 plus 24 plus 9. So 58 plus 9 67 हो जाएगा. Some statements followed by conclusions are given. Read all the conclusions and then decide which of the following conclusion can logically follow. B greater than or equal to O equals to M less than A. J equals to G greater than U greater than P equals to A. So अब यहाँ पे है two statements. Which one of the following is correct? Only one conclusion. तो यहीं पे आगे कंटिन्यू कर देते हैं. A equals to P, P is less than U less than G equals to J. So A equals to P, P less than U, U less than G, G equals to J. So definitely A will be what? Less than J. ये पहला सही है. And B less than G, B यहाँ पे है, G यहाँ पे है. You in between you have signs of opposite direction. You have symbols of opposite direction. So if you have symbols of opposite direction, then definitely यहाँ पे आप कुछ conclude नहीं कर सकते. ये statement है आपको. Statements given. Conclusion you have to check conclusion. So all of you now here in this case when you have to check the conclusion, P and E. अब देखो all of you अब यहाँ पे ऐसे बताए ना, P यहाँ पे है आपका, E यहाँ पे है. P is here, E is here.
Between P and E you have symbols in opposite direction, ऐसे भी है ऐसे भी है, then definitely between P and E you cannot conclude anything. E यहाँ पे है, N यहाँ पे है, between E and N definitely you have symbols in same direction, एक ही direction में है, but यहाँ पे ये less than equal to, यहाँ less than equal to, यहाँ less than है, so E will be what, less than N, E will be less than N. तो आपका second one भी wrong हो गया because E will be less than N, so second one is also, so neither conclusion first nor second follows. अरे ये तो बहुत easy है, ये क्या करना, color of clear sky. So now all of you here in this case question number 51 to 52. Okay, data given below represents a coded language for different professions. Analyze it and answer the questions below. Doctor, engineer, businessman, CA, scientist is written as but, cut, put, hut, nut. Written as hut, rat, wet. अब देखो, now all of you here these type of questions what we do, हम क्या करते हैं, we actually look for the common ones. हम क्या करते हैं, we look for the common words कि यहाँ पे क्या है, common profession है इनमें, and here in terms of code what are the common one. तो अब जैसे first and second में CA is common, and all of you what is common, hut is common. So CA is common, so all of you CA code will become what, hut. CA code will become hut. अब first and third में CA now we know is hut, scientist is also common, and यहाँ पे क्या common है, but and hut common है, CA and scientist, but and hut. So scientist के लिए all of you what will be the code, but will be the code. Banking, engineer, writer, so first and उसमें nut, hat, rat, so nut, engineer will become, engineer will be nut, so engineer is nut. Then doctor, engineer, आपको engineer हो गया, scientist हो गया, CA हो गया, doctor and businessman are remaining, so doctor and businessman are remaining. Okay, now here in this case अब आप ये second and third में देख लो, banking, manager, trader, CA, scientist, trader, astrologer. So what is common, hut is common, hut we already know. Apart from hut, VET is common, trader is common. So what is the code for trader, trader का code हो जाएगा VET. So all of you I think now you can solve the other question also, you can find it. VET code हो गया आपको trader का. Seven persons MNOP, QR and S appear for a medical test. O and Q live in Delhi while the others live outside Delhi. Okay. Only P and R were diagnosed with diabetes. Only MOP have vitamin A deficiency. When find who among them live outside Delhi and have vitamin D deficiency with no diabetes. So up Delhi, outside Delhi. So all of you, O, N and Q live in Delhi. O है, N है, Q है, live in Delhi. And then remaining M, P, R, S, they live outside Delhi. Now they live outside Delhi, all of you, they live outside Delhi. Now here in this case, अब diabetes है, and then vitamin D deficiency है, vitamin D deficiency. So now all of you, diabetes and vitamin D deficiency. So diabetes, only P and R are diagnosed with diabetes. So P and R diagnosed with diabetes, तो P and R तो outsider है.
MOP have vitamin A deficiency. MOP have vitamin D. MOP have vitamin D deficiency. Then find who among them live outside Delhi. अब outside Delhi है and have vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency but with no diabetes. So आपको क्या हो जाएगा? M हो जाएगा. So answer will be M. Now all of you ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. There are 9 letters and 9 corresponding envelopes. If 9 letters are placed into 9 envelopes randomly, find the number of ways in which exactly one letter is placed into a wrong envelope. अब देखो all of you याद रखना, अब 9 letters है ना, and you have 9 envelopes exactly. तो अब याद रखना कि अब सपोज ये लेटर्स के लिए दीज आर दी करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स. तो अब इनके लिए सोचो ये करेक्ट एनवेलप है. दीज आर दी करेक्ट एनवेलप्स फॉर ईच. These are the correct envelopes for each. Then number of ways in which exactly corresponding 9 envelopes, corresponding यानी कि इन 9 letters के लिए ये 9 envelopes हैं. Find the number of ways in which exactly one letter is placed into a wrong envelope. अब देखो एक चीज याद रखना, अब सब हर एक लेटर का एनवेलप फिक्स है. So if this letter is placed in the wrong envelope, then definitely other letter will be also placed in the wrong envelope. अब एक लेटर अगर रॉन्ग एनवेलप में चला गया ना, तो आपको डेफिनेटली सेकंड लेटर भी आपको रॉन्ग, क्योंकि अब आप रॉन्ग एनवेलप में गया तो जो रॉन्ग एनवेलप का जो लेटर था उसको भी तो आपको रॉन्ग एनवेलप में जाना, यानी आप कभी भी एग्जैक्टली वन लेटर रॉन्ग एनवेलप में जा ही नहीं सकता. एग्जैक्टली वन लेटर कैन नॉट गो इनटू द रॉन्ग एनवेलप. सो एग्जैक्टली वन लेटर कैन नॉट गो इनटू द रॉन्ग एनवेलप. तो आपको एग्जैक्टली वन लेटर इज प्लेस्ड इनटू द रॉन्ग एनवेलप, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो आंसर क्या होगा? 0. आपको कम से कम 2 होंगे कि अगर इसका ये है, ये इसमें चला गया तो ये इसमें गया, तो 2 लेटर होंगे ना रॉन्ग. क्योंकि लेटर अब हमेशा याद रखना कि लेटर एनवेलप में प्लेस्ड किए जाते हैं. तो अब प्लेस कर दिया आपने, तो अगर एक अगर रॉन्ग हुआ तो यानी कि दूसरा भी रॉन्ग होगा ही. Different symbols are given. P plus Q means is not smaller than Q. P but all of you now will have to take the exact question. Actually question आपको separately, I am just writing down all the instructions. P plus Q means P is not smaller than Q. P plus Q. P plus Q. P plus Q means P is not smaller than Q. So P plus Q means P is what? Greater than or equal to Q. P dollar Q means P dollar Q means P is neither smaller than or equal to Q. It means P is greater than Q. P exclamation mark Q means P is neither greater than nor smaller nor equal to Q. So it means P is less than Q. P at the rate Q means P at the rate Q means P is not greater than Q. So P can be less than or equal to Q. And P hashtag Q means P hashtag Q means
P is neither greater than nor smaller than Q. It means P is equal to Q. So A exclamation mark B, it means A is less than B. अब देखो यहाँ सिंबल मतलब करते हैं, A P B C P Q D Q कुछ भी हो. अरे विच क्वेश्चन आई हैव स्किप्ड डियर, कहाँ कोई क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं? नॉट स्किपिंग एनी क्वेश्चन. अब वो पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन है, तो इतना तो इजी. व्हेन ऑल द अरेंजमेंट एवरीथिंग इज डन डियर, स्किप. B hashtag Q, B hashtag C is equal to what? B equals to C. C dollar D means C is greater than D. D plus E means D is greater than or equal to E. So अब यहाँ पे ही एक जगह कर लेते हैं. A less than B equals to C greater than D greater than or equal to E. D dollar B. So D dollar B means D greater than B. Is D greater than B? So now all of you, 59th question में, will D be greater than B? Yes or no? No, D will be not greater than B. A exclamation mark C, A exclamation mark C, A exclamation mark C means A is less than C. So A is less than B, B is equal to C. So definitely A will be what? Less than C. Yes, A is less than C. So I hope this is clear now. So इसमें सिर्फ सेकंड करेक्ट है. पीयूष अभी ये कहते हैं डियर, हमेशा याद रखो जो वो उसकी क्या है, वो एकदम डेफिनेट है, 100% है. आप ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 37 का जो सेकंड था ना कि नॉट येलो नॉट अ पॉसिबिलिटी, अरे कि इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वो डेफिनेट है. पॉसिबिलिटी नहीं है, वो डेफिनेट है कि डेफिनेटली ये सम ग्रे आर नॉट, ये सम ग्रे आर नॉट येलो, वो एकदम करेक्ट होता. सम ग्रे आर नॉट येलो इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का डेफिनेट. ये है. देखो आई विल डेफिनेटली अग्री कि यूपीएससी के क्वेश्चंस में ना, यूपीएससी में क्वेश्चंस में पहले तो ऐसा होता था कि यूपीएससी एकदम क्लियर कर देती थी, यूपीएससी क्लियर कर देती थी और कोई एम्बिगिटी नहीं रह जाती थी इस टाइप की. बट नाउ व्हाट डेज समटाइम्स इट इज, बिकॉज वी हैव सीन क्वेश्चंस जहां पे इस टाइप के कंफ्यूजन रहे हैं कि आपको उन्होंने यानी कि पॉसिबिलिटी और इस टाइप जहां डेफिनेट रहा है, दे हैव कंसिडर्ड इट रॉन्ग, दे हैव कंसिडर्ड इट रॉन्ग. पीयूष और एक देखो एक चीज याद रखो डियर, क्वेश्चन इमीडिएटली पूछा करो ना. बार बार हम स्क्रीन पे ही ऐसे घूम घूम कर क्यों देखते रहते हैं यार? ऐसे इसलिए घूम रहे के देख रहे हैं कि कुछ इफ यू आर नॉट आस्किंग नाउ और क्लैरिटी है ना, सब कुछ कंटिन्यूअस चल रहा है ना, क्योंकि पीछे यूट्यूब पे मेरे भी लाइव चलता है तो हम देखते रहते हैं कि कोई कमेंट तो नहीं आया या फिर सब कुछ क्लियर है. अब देखो नाउ हियर इन दिस केस, अब क्वेश्चन नंबर 43 आई जस्ट गिव यू ओरली बता देते हैं डियर. मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल वेट कहेगा ना, तब तो छोटू 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 टू मेनी यू कैन नहीं होता, यू कैन हैव स्मॉल स्मॉल पीसेज ऑफ केक. अरे डियर मिनिमम नंबर करने के लिए कोई भी चीज कम से कम चाहते हो कि अरे कम रहे, तो साइज उसका बड़ा होना चाहिए ना. अब कम करना है तो डियर साइज तो बड़ा करना पड़ेगा, वरना कम कहां से होगा. मैक्सिमम नंबर में तो कोई वही नहीं है, इतने छोटे 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 एकदम छोटे दाने दाने केक के दाने दाने करते जाओ, वो तो इनफाइनाइट हो जाएंगे. इतना छोटा छोटा केक प्रोवाइड करो. अब इसमें क्या कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल साइज, तो मिनिमम नंबर यानी कम से कम केक के
केक होने चाहिए, पीसेस जो है केक के कम से कम होने चाहिए। तो अब केक कम से कम होने चाहिए तो साइज केक का जितना बड़ा हो सकता है वो होना चाहिए, इस और बराबर भी होना चाहिए, साइज बड़ा भी और बराबर भी। तो साइज HCF है कि बड़ा रहेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा है कि कम पीस। एक केक को 2 टुकड़ों में काटोगे तो बड़ा बड़ा पीस रहेगा, 4 में करोगे तो अपना 4 पीस रहेगा बड़ा। तो अब यहां पे क्या करना है, ये है कॉन्सेप्ट। अब देखो ना ऑल ऑफ यू, बेस्ड ऑन दिस ओनली, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रखना जो स्टेटमेंट्स, आई विल जस्ट टेल यू दी स्टेटमेंट्स। आपको स्टेट, क्योंकि अगर फिगर चेंज, पेज चेंज करेंगे तो आई विल हैव टू ड्रॉ दिस अगेन। $N, $N means, $N means J is greater than N, N at the rate A means, N at the rate A means N is less than or equal to A hashtag C means, A hashtag C means A is equal to C, and C exclamation mark F means C is less than F। तो एक तरह से ये क्या हो गया, J greater than N, less than or equal to A, equals to C, less than F। अब कंक्लूजन में पहला पूछ रहा F plus A, F plus A it is asking, so F plus A means F greater than or equal to A, so F greater than or equal to A है नहीं, F, all of you remember F is greater than A, so F greater than or equal to A will be wrong, F is greater than A। सेकंड है $J, A और J में तो कोई कंक्लूजन you cannot find out because you have symbols of opposite direction। थर्ड है N exclamation mark C, N exclamation mark C, N less than C, no, N is less than or equal to C, तो ये भी wrong है, फर्स्ट भी wrong, सेकंड भी wrong, थर्ड भी wrong। डियर क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग, पीयूष रीड द क्वेश्चन। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हैं, कम से कम लोगों को केक खिलाना है यार, तुमको पूरी बारात को केक नहीं खिलाना है, कम से कम लोगों को केक खिलाना है, एकदम क्लोज्ड वंस है। तब तुम्हारे जो करीबी आएंगे उनको केक खिलाना है तो क्या दोगे, बड़े से बड़ा केक का पीस दोगे ना यार, कि छोटे छोटे सा पीस दोगे। मैक्सिमम नंबर तो सही में अपना ले जाके अपना बारात में एक केक लेके जाओ, अब पूरे बारात को खिलाना होगा तो छोटा छोटा टुकड़ा ही ना करोगे, फिर उस केस में थोड़े करोगे। क्वेश्चन समझा करो तुम लोग। Study the following information carefully and answer the questions that follow. So now here in this case all of you directions, study 10 members in a 3 generation family, that is A B C D E F G H I and J. Among 10 them there are 4 married couples and only 4 females, 4 married couples and 4 females हैं। A is wife of G's maternal uncle, E and G are sons of C, D has only 2 children, J is father of H, B is married to D, I is daughter-in-law of F, and F is son-in-law of B, C is married to F, B is father-in-law of I's father-in-law, E is not married। अब देखो ना ऑल ऑफ यू हियर, अब डायरेक्टली आई विल बी फॉर्मिंग चार्ट हियर ओनली, अब यहीं पे चार्ट फ्रेम कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेस है नहीं तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक। सो आई विल बी फॉर्मिंग चार्ट हियर।
तो आप अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है, सो देयर आर 10 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। ओके, ये है आपको, दीज आर दी पर्सन्स, 10 पर्सन्स, 4 फीमेल्स हैं आपको, डेफिनेटली 4 मैरिड कपल्स हैं, 4 फीमेल्स हैं। ओके, ए इज वाइफ ऑफ जीज मैटरनल अंकल, so A is wife of G's maternal uncle, and given, all of you just keep on reading, E and G are sons of C, E and G are son of C, E and G are son of C, so आपको C है यहाँ पे फीमेल, E and G are son of C। देखो ऑल ऑफ यू ध्यान से एक चीज ध्यान देना, E and G आर सन ऑफ C ना, तो अब यहाँ पे विल बी रिप्रेजेंटिंग फीमेल्स बाय सर्किल, मेल्स बाय स्क्वायर बॉक्सेस। फीमेल्स को हम सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे, मेल्स को स्क्वायर बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ ऑल ऑफ यू, व्हाट एल्स इज गिवन, रीड द कंडीशन। नाउ D has only 2 children, okay, D has got only 2 children, J is father of H, J is father of H, we are leaving it as it is now, B is married to D, B is married to D, and here just before given A is wife of G's maternal uncle, so A is wife of G's maternal uncle, so A is wife of, yani A will be in this generation, now I is daughter-in-law of F, F is son-in-law of B, F is son-in-law of B, and C is married to F, C is married to F, C and F are couple, C is married to F, B is father-in-law of I's father-in-law, E is not married, okay, E is not married, so now here in this case आप combine कर रहे हो, so now here there finally आपको D and B male आएंगे, now here J will be male, F is the male, and then they will be having one kid, that is H, and G and I okay, so now all of you here, this is the family tree complete। अब देखो 4 फीमेल्स हैं तो डेफिनेटली ये मेल होगा। Who among them is the father of J? So who among them is the father of J? Definitely all of you father of J आपको क्या हो गया, B, and next question number, true about G, A is the grandmother of G, no, H is the sister of G, no, F is the father of G, F is the father of G, okay, so now here in this case yes, definitely F will be what, father of G। I hope it is clear now। Question, next question था, I was discussing the next question। Now all of you, question number 63 given, Ila's salary is X% more than Daniel, Daniel is Y% less than Chitra, if Ila's salary is greater than Chitra, what is the percentage relation between X and Y? Daniel is Y% less than Chitra, and
Ila's salary is X% more than Daniel. So अब मानो all of you suppose Chitra salary if it is 100. So what will be the salary of Daniel? Daniel की salary क्या हो जाएगी? All of you, salary of Daniel will be what? Y% less than Chitra. So 100 minus Y% of 100, that is 100 minus Y upon 100. अब देखो common sense, Y upon 100 into 100, that is, अब understanding है तो directly you can write down 100 minus Y. Ila's salary is X% more than Daniel. अब Ila's salary is X% more than Daniel. So 100 minus Y plus X% of 100 minus Y. So it will be simply 100 minus Y plus X upon 100 into 100 minus Y. Okay. Now all of you, given here, Ila's salary is greater than Chitra. Ila's salary is greater than Chitra. It means this part, 100 minus Y plus X upon 100 into 100 minus Y is greater than, Ila's salary is greater than Chitra's. So greater than 100. Okay. So now all of you here in this case, now you have to solve it. अब देखो यहाँ पे अब all of you ध्यान देना, आप कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं. No confusion till now. अब 100 into kind of 100 minus Y plus X into 100 minus Y upon 100 is greater than 100, is greater than 100. या इजी आप लोगों को कैलकुलेशन बताएं, सबसे इजी कैलकुलेशन, ऑल ऑफ यू सबसे इजी कैलकुलेशन यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन कर लो. ये 100 माइनस वाई है ना, तो ये 100 उधर भेज दो, तो आपको ये 100 और ये 100 विल कैंसिल. 100 माइनस 100 0. अब देखो माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन 0. अब वाई उस साइड चला गया, सो एक्स अपॉन 100 ब्रैकेट में 100 माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन वाई, वाई प्लस हो गया. अब देखो अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100x 100 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 100y. x into 100 minus y is greater than 100y. x into 100 minus y is greater than 100y. So अब now all of you send it 100x minus xy greater than 100y. So 100x will be greater than 100y plus xy. All of you, just you solve it, you will get the answer. Is this clear to all?
So 100x is greater than 100, अरे इसको 100 y को कॉमन ले लेना, सॉरी y कॉमन लेना, 100 प्लस x हो जाएगा. So 100x is greater than y into 100 plus x. ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी. आंसर विल बिकम ऑप्शन सी. Is this question clear? Because many students had confusion in this question. इस question में many students को confusion था. I hope it is clear to all. Because many students they asked this question to me, मैसेज किया था मुझे कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिएगा. सो आई होप ये क्लियर है. ये कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना, ये वाला कैलकुलेशन, ये x अपॉन 100 100 ये है और फिर ये है. Now all of you, question number 64, just read question number 64. Now all of you, when a car manufacturer reduced selling price of a car by 50%, the number of cars sold increased by 500%. The manufacturer's initial profit was 150%. What is the percentage change in the company's profit? Percentage change in the company's profit when a car manufacturer, now here in this case, you have to find out. अब देखो, reduced selling number of cars increased, sold increased by 500%. Find the manufacturer's initial profit was 150%. So what is the percentage change in company's profit? Now percentage change in company's profit. So now all of you here in this case, if suppose earlier the price was 100, अपना 100 से new price becomes 50. The number of cars sold increased. Selling price of a car by 50%. अब याद रखना all of you, selling price reduce कर रहा है, number of cars increased, initial profit was 50. So suppose initial cost price was 100% या CP 100 है, profit 150% था. So selling price would be what? 250.
Now new selling price becomes your 125. New selling price becomes 125. Now all of you here, what is the percentage change in the company's profit? So percentage change in the company's profit. So now here in this case, all of you, number of cars if it keeps on changing. Now here in this case, earlier cost price was 100, selling price 250. So I will take two different cases here. Suppose earlier number of cars sold was 10. Number of cars sold was 10. So now number of cars sold is 60. Because 500% increased हो गया. So 500% increase हो गया. So now all of you here in this case, earlier what was the total profit? एक कार पे प्रॉफिट हो रहा है 150 रुपीस का. So total profit would be what? Total profit would be 150 into 10. That is 1500. Now here one car पे all of you प्रॉफिट अब कितने का होता? 25 रुपीस का ही प्रॉफिट होगा. Now number of cars he is selling is 60. So total profit would become what? Total profit would become 25 into 60, that is 1500. So earlier bhi total profit 1500, and now also total profit 1500. So there is no change in the company's profit. We are getting 0%. अब देखो यहाँ पे all of you एग्जाम में याद रखना, confirmation के लिए once we have taken number of units 10 ना, so we will have to take the case number of units taking different also. Suppose number of cars earlier being sold was 30. Then earlier total profit would be what? 150 on each car into 30. So 4500 would be the earlier profit. Now how many cars he would be selling? He would be selling now 180 cars because his sale increased by 500%. And then how much profit he would be making on each car? 25. So 25 into 180. Here also we get the total profit as 4500. तो अब यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है कि टोटल प्रॉफिट चेंज हो ही नहीं रहा है. टोटल प्रॉफिट इट रिमेन सेम. सो इफ वी आर चेंजिंग डिफरेंट वैल्यूज, अब देखो हमेशा याद रखना एग्जाम में आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि कई बार क्या करते हैं ना बुक्स में या एक्सप्लेनेशन में बस वो एक वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं. आपको एक वैल्यू नहीं, यू विल हैव टू टेक टू डिफरेंट वैल्यूज, टू डिफरेंट नंबर्स एंड यू विल हैव टू चेक. अगर 2 पे यू आर गेटिंग सेम ना, देन ओनली यू कैन से, otherwise you cannot. A, B and C complete a work together in 6.4 days. B can complete the whole work in 96 days. C is 33.33% more efficient than A. Then find the difference in time taken by A and C to finish the work alone. So now here in this case, A, B and C can complete the work together in 6.4 days. B can complete the whole work in 96 days. आपको B can complete the whole work in 96 days. C is 33.33% more efficient than A. Then all of you here in this case, अब ध्यान से, now directly you can solve it. I will just frame the equation, you solve it. If C is 33.33% more efficient than A na, it means A would be taking 33.33% more days than A. Sorry, C. A would be taking 33.33% more days than C to complete the work. So it means if A could complete, sorry, C could complete any work in 3x days,
then A would be completing the same work in 4x days. And then all of you here, B can complete the same work in 96 days. So 1 by 3x plus 1 by 4x plus 1 by 9x, sorry 96 is equal to 1 by 6.4. इसको 10 by 64 कर दो. So 1 by 3x plus 1 by 4x equals to 10 by 64 minus 1 by 96. Suppose I am taking just 960 ऐसे ले ले रहे हैं. So 960 है तो 15. So 15 into 10. So 7 upon 12x equals to 140 upon 960. 12, 8, 2 and 4. So x is equal to what? X equals to 4. और क्वेश्चन क्या है? Find the difference in times taken by A and C to finish the work. तो difference in time, A 4x days, C 3x days. So difference in time will be x days. अरे वाह, x is the answer. So now directly you are getting x as the answer. अब देखो ना ऑल ऑफ यू, ये आपका शू कंपनी प्रोड्यूसेस शूज ऑफ 3 डिफरेंट साइजेस. 7, 8, 9 गिवन बार ग्राफ shows the percentage of UK 7. अच्छा, फर्स्ट वन इज गिविंग अस UK 7 shoes. Second number gives us the number of UK 8 shoes are more than that of UK 7 shoes. Okay, and then third one gives us number of UK 9 shoes produced. वह शूज नहीं होगा, शूज ही होगा. शूज और शूज हो गया, तो ये शूज ही है, शूज नहीं होगा. ये आपको सारे के सारे ये शूज हैं. ओके, कोई शो नहीं है यहाँ पे. ऑल आर योर शूज ओनली. What is the average number of the shoes produced by? All of you, average number of shoes produced by company in 2016, 17 and 18. So 2016, 17 and 18. So now all of you, here you do the calculation. अब देखो ना ऑल ऑफ यू, आई विल जस्ट गिव यू द हिंट हाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन हियर. अब ध्यान से देखना, ये 25% है. ओके, एंड दिस इज दिस सेकेंड ग्राफ, इट शोज UK 8 shoes are more than that of UK 7 shoes. So अब ये है एक्चुअली UK 8 shoes how much more than UK 7 shoes. So ये 25% है, तो ये 20% of 25% more. So 20% of 25% क्या होगा? 2.5, 2.5
5%, तो ये 25% है, तो ये कितना हो जाएगा 30%, तो ये 30% हो गया. देन रिमेनिंग विल बी ऑल ऑफ यू योर UK9 शूज. अब बाकी UK9 शूज होंगे, यानी कि UK9 शूज कितने होंगे 45% होंगे, तो 45% इज इक्वल टू व्हाट 360. 45% इज इक्वल टू 360, तो टोटल नंबर ऑफ शूज क्या हो जाएंगे 100%. सो 100% यू जस्ट फाइंड आउट, तो 100% क्या आ जाएगा 360, तो आपको 100% यहाँ 800 आ जाएगा. सो दिस 800 शूज, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें. सिमिलरली हियर आल्सो यू कैन फाइंड आउट, ये अगर 40% है, ये 15% ग्रेटर है इससे, सो 15% ग्रेटर देन 40% मीन्स व्हाट 4 + 2 46%, तो ये आपको कितना हो गया, ये 14% हो गया. So 14% is 168. So 100% will be what? Similarly, ये देख लेना 15% है, and then all of you just do the calculation in the same manner. तो आपको ये कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा, तो 51 + 21 36%. So 36% गया 100 में से 64%. And similarly 20% और 45%, so 9%, तो 20 + 29 29% ये हो गया, तो ये 51%. तो अब all of you just do the calculation, value calculate कर लेना accordingly. I hope you all can get. अब ये समझ में आ जाएगा, ये कर लोगे. अब ये easy question है, अब ये बस calculation करना है, इसमें कुछ बचा नहीं. ये 1200 आ जाएगा मेरे ख्याल से, ये 600 आ जाएगा, और ये 1500 आ जाएगा. तो 1800 1500 3300, और 3300 का एवरेज क्या हो जाएगा 1166. क्वेश्चन का तो आंसर क्या हो जाएगा सी 1100. तो अब ये कर लेना कैलकुलेशन, अब ये कुछ बचा नहीं. Next question, Aman brought an article at 20% discount on MRP. He claimed to sell it at a profit of 20% on MRP. When a customer offered him 400, he cheated by giving him ₹60 instead of 160. Find the overall profit percentage of Aman. So now here you have to find out overall profit percentage of Aman. Here find out. Cheating कर रहा है तो फिर तो. Aman bought an article at 20% discount on MRP. He claimed to sell it at a profit of 20% on MRP. When a customer offered him ₹400, he cheated by giving him ₹60 instead of ₹160. Find the overall profit percentage of Aman. ठीक. MRP of article मानो जैसे 100% है, so he brought it at a discount of 20% on MRP, यानी कि 80% पे परचेज किया. He claimed to sell it at a profit of 20% on MRP. So MRP के 20% यानी कि एक तरह से आपको, अब देखो, अब इसमें एक्सप्रेस करते हैं क्वेश्चन. मार्क प्राइस है सपोज 100%, तो डिस्काउंट है 20%. सो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर अमन. अमन के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा 20% डिस्काउंट पे 100% से लिया, यानी 80% पे ही परचेज्ड. एंड देन he claimed to sell it at a profit of 20% on MRP. MRP पे ही बेच रहा है, ये मार्क प्राइस पे बेच रहा है ये, तो मार्क प्राइस के 20% प्रॉफिट इसको हो रहा है. तो यानी कि अब सेलिंग प्राइस अमन का क्या है, सेलिंग प्राइस इज 120%, क्योंकि अब इस पे अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है, 120% पे सेल कर रहा है. क्लियर. When a customer offered him ₹400, he cheated by giving him ₹60 instead of 160. Okay, so now all of you 400 rupees में, अब ध्यान देना, now here in this case आपको कस्टमर ने कितने में परचेज किया है कस्टमर ने परचेज किया, आपको 400 रुपीज दिए, इसको 160 रुपीज ही हैड टू रिटर्न, यानी कि एक तरह से सेलिंग प्राइस अमन का क्या था, अमन कितने में सेल कर रहा था,
अमन सेल किया है उसको 240 रुपीज में, और उसको 400 माइनस 160 दैट इज 240 रुपीज, और अमन को कॉस्ट प्राइस कितना था, अमन को कॉस्ट प्राइस था रुपीज 80%, सब 120%, अगर आपका 240 है तो 80% क्या हो जाएगा रुपीज 160, और 60 ही वापस किया एक्चुअली, अब यानी कि एक तरह से कितने में वो सेल कर दिया, 340 रुपीज में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सॉरी, यहाँ पे इसको ओरिजिनल पहले प्रॉफिट कितना होता रुपीज 80 का, अब उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, इसने 60 रुपीज ही रिटर्न किया इंस्टेड ऑफ 160, यानी 100 रुपीज का प्रॉफिट ये चीटिंग करके किया, तो रुपीज 180, यानी प्रॉफिट हुआ 180 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है 160, सो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 180 अपॉन 160 इंटू 100%, प्रॉफिट परसेंट विल बी 180 अपॉन 160 इंटू 100%। तो आपको क्या आ जाएगा नाउ हियर, so 112.5%, you will get 112.5%, so what will be the profit 112.5%, so 340 रुपीज में सेल किया था, तो यानी कि उसको प्रॉफिट एक तरह से क्या हो रहा था 340 रुपीज उसको पड़ा, तो 340 माइनस 160 180 का ही तो हुआ उसको प्रॉफिट। Now all of you here in this case, next is given Shivangi gave Chanchal as many chocolates as each one of them already had. Then Amrita gave Shivani and Chanchal as many chocolates as each already had. Now each of them had an equal number of chocolates. Now number of chocolates is, so अब here in this case, now each of them had equal number of chocolates. So again all of you here 75 76 two questions के लिए है. So number of chocolate Shivangi, Chanchal and Shivangi है, Chanchal, Amrita. Suppose इनके पास चॉकलेट्स थे X, Y and Z. Shivangi gave Chanchal and Amrita as many chocolates as each one of them already had. यानी इसने क्या किया, Chanchal had Y, so उसको Y दे दिया, तो she will have 2Y. Amrita 2Z, अब इसके पास कितना हो जाएगा X minus Y minus Z. Then Amrita gave Shivangi and Chanchal as many chocolates as she already had. She already had. तो अब यहाँ पे इस केस में इसका नंबर ऑफ चॉकलेट क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसका चॉकलेट डबल हो जाएगा 4y, और इसके पास कितना चॉकलेट 2x माइनस x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2y. This will be the number of chocolates. Okay. So इसको सॉल्व करो, 2z ये आपको 2z प्लस z ये 3z हो गया, 3z और ये प्लस y माइनस 2y, so 3z माइनस x प्लस y minus 2y, so plus y minus 2y is minus y, 3z minus x minus y. Now all of you all are equal to each other.
अब all are equal to each other, so अब इसमें just यानी कि solve कर लो, solve it to find the value of x, y and z. अब each had equal number of chocolate, तो अब 84 chocolates है total, तो अब 2 into x minus y minus z equals to 84, so x minus y minus z equals to 42, 4y equals to what, 84, so y equals to 21, and then 3z minus x minus y, 3z minus x minus y equals to also 28. सॉरी ये 84 नहीं होगा, ये 84 का 1/3 दैट इज 28. फोर y equals to 28, so y equals to I hope it is clear to all of you. Now you solve it to find out the value of x and z. So I think x you will get 49 and your z you will get 28. X you will get 49, z you will get 28, and y equals to what, 7. Now next question, speed of bus on Yamuna highway is 54 km per hour without any passengers, proportional to square of the passengers present in the bus. Speed is proportional to the square of the passengers present in the bus. It is observed that speed of bus is 45 km per hour with 25 passengers in it. Find the maximum number of passengers the bus can carry. So 54 था when 0, 45 हुआ when 25, so reduction is 9. Reduction is directly proportional to the square of the passengers present in the bus. ये ऑल ऑफ यू यहाँ पे इसमें एरर है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर रूट होगा. Reduction in speed is directly proportional to square root of the passengers present in the bus. स्क्वायर नहीं होगा, रिडक्शन तो अब स्क्वायर 25 स्क्वायर 625 तो बड़ा ही वो हो जाएगा. So here reduction will be square root of the thing. So 9 will be equal to k into 5. Find maximum number of passengers the bus can carry. 54 से maximum reduction in speed can be what? So यहाँ पे k की value क्या हो गई, 5/9. This one remains fixed. Now all of you, maximum reduction in speed possible क्या होता है आपको, 54, तो 54 is the reduction. So 54 is equals to k upon 9 into root n dash. So 54 into x and let's check it. इस मिनट इसको चेक कर लेते हैं, इसको स्क्वायर रूट स्क्वायर ही करके देखते हैं. डायरेक्शन रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. ऑल ऑफ यू एक मिनट. 9 is so r equals to k into n square. So a equals to (25) square upon 9. K equals to 25 square upon 9. So now here maximum reduction possible is what? Maximum reduction possible is 54. So r dash equals to k into
n dash square. So r dash, that is 54, equals to 25 square upon 9 into n dash square. So now all of you, ये भी नहीं है, ये स्क्वायर रूट ही है आपको, इसलिए मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है ना। रिमेंबर, ये स्क्वायर रूट ही है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होके नहीं हो पा रहा है। ऑल ऑफ यू जस्ट रिमेंबर, ये कंफर्म, ये क्वेश्चन में एरर है आपको, ये r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट n डैश ही है। ओके, सो रूट n डैश है, तो यहाँ पे डायरेक्टली, अब देखो, अब ऑल ऑफ यू ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कर सकते हैं। रूट यानी कि 9 रिडक्शन हो रहा है व्हेन स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5 आया। सो अब रिडक्शन 6 टाइम्स होगा ना, ऑल ऑफ यू, रिडक्शन 6 टाइम्स होगा। सो नाउ हियर इन दिस केस, अब आपको यहां से एवरी 9 रिडक्शन पे, यानी एवरी हियर इन दिस केस आपको डेफिनेटली वो ऐड होते जाएंगे आपको। सो यू गेट 36 पैसेंजर्स, आपको 6 टाइम्स हो जाएगा। ये 9 into 5 is 45, वन पार्ट इज 9, सो 6 पार्ट विल बी 54। सो आपको क्या हो जाएगा हियर, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स बस कैन कैरी। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू जस्ट रिमेंबर, ये क्वेश्चन में आपको एरर था। ऑल ऑफ यू जस्ट रिमेंबर, तो आपका 36, अब याद रखना 36 पे मैक्सिमम रिडक्शन हो जाएगा, सो 54 से स्पीड विल बिकम व्हाट, 0, बट द क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स द बस कैन कैरी। तो अब 36 पे तो रिडक्शन टोटल 54 होगा, सो 36 minus 1, 35, आंसर विल बी 35। तो याद रखना ये एरर है, डेफिनेटली एरर है। सो ऑल ऑफ यू, लास्ट क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग, वो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का इजी है। शॉपकीपर डाइल्यूट्स जूस concentrate of 180 liter by adding 20 liters of water. He sells 30 liters of this mixture. जूस कंसंट्रेट ऑफ 80 लीटर, जूस आपको 180 लीटर था, एडेड वाटर 20 लीटर, ही सेल्स 30 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, सो 200 लीटर में से 30 लीटर सेल कर दिया, so 170 लीटर। नाउ ही टेक्स दिस मिक्सचर एंड फर्दर एड्स वाटर एंड कंसंट्रेट इन द रेशियो ऑफ 3:2 to achieve a final solution of 275 liters with 60% concentrate. How much water did he add in the second step? So now all of you here, 275 liters are final, 275 liters are final, 60% of the juice concentrate hai, so 60% of 275 liters, so 60 upon 100 into 275, $165 liters. So all of you, 165 liter आपको juice concentrate है. So now here 165 liter is juice concentrate. Is it clear? So 165 liter is juice concentrate.
नाउ इन दिस केस ऑल ऑफ यू अब ध्यान से सुनना, एक चीज देख लेना, यहाँ पे 180 लीटर है, 20 लीटर है, 180 लीटर 20 लीटर, so ratio of juice and water will become what? 9:1. So now here in this case it means 170 लीटर में 170 लीटर में how much will be juice, what will be the quantity of water? So 9:1, so 30 लीटर गया है ना, so 30 लीटर में 3 लीटर will be this one gone, that is आपको 17 लीटर होगा, and $27 liter here. So now all of you here in this case 9:1, so all of you याद रखना ये जो 30 लीटर है ना, so 30 लीटर में 9:1 के रेशियो में it means 9:1 के रेशियो में it means 3 लीटर and ये 27 लीटर. So what will be the quantity? 180 minus 27, that is 153 liter. 153 liter is what? Your quantity of juice here. Once आपको 150 लीटर आपको क्वांटिटी ऑफ जूस है. ओके, सो 12 लीटर ऑल ऑफ यू हियर इन. अब याद रखना, now he takes this mixture and further adds water and concentrate in the ratio of 3:2. so 3:2 के रेशियो में ऐड किया, 153 यहाँ पे आया और ये 165 लीटर यहाँ पे है. It means 12 liter he added. So all of you 12 liter he added. So water and concentrate in the ratio of 3:2. So if 2 part is, आपका याद रखना, now all of you here in this case 2 part is what? 12 liter, then what will be 3 parts? 18 liter. यहाँ याद रखना ये आपको 17 लीटर है और ये 153 लीटर है, टोटल 170 लीटर है, ये 153 लीटर ही जूस है और यहाँ पे 165 लीटर आ रहा है. इट मीन्स 12 लीटर जूस वॉज एडेड, और 12 लीटर अगर जूस ऐड हुआ था एंड वाटर एंड दिस कंसंट्रेट वॉज मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:2, so 2 part is 12 liter, then 3 part will be what? Your 18 liter. So ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. ऑल ऑफ यू याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है. सो हाउ मच वाटर डिड ही ऐड? सो ऑल ऑफ यू विथ दिस, ये स्टेप याद रखना, 153 165 12 लीटर ऑफ जूस इज एडेड, 3:2 है रेशियो ऑफ वाटर एंड जूस. वाटर एंड कंसंट्रेट का रेशियो 3:2 है, तो 2 पार्ट अगर 12 लीटर है तो 3 पार्ट विल बी व्हाट? 18 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन था हाउ मच वाटर डिड ही ऐड इन द सेकंड स्टेप. सो यही सेकंड स्टेप था जहां पे जूस एंड वाटर ही एडेड. सो ऑल ऑफ यू विथ दिस आपका अनुभव का सेकंड भी खत्म हो गया. वन ऑफ द स्टूडेंट वाज आस्क्ड वन क्वेश्चन, आपको सिमरन याद रखना, 15 men can finish a work in 210 days. Every 10 days 15 more men are employed. So hint दे रहे हैं, 15 men का 1 day वर्क होगा 1/210, 10 days वर्क हो जाएगा 10/210 यानी 1/21. So 10 days में 1/21 वर्क कंप्लीट करेंगे. आफ्टर 10 days 15 more men will join. तो कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? जस्ट डबल मैन हो गए तो 2/21. फिर अगेन 15 मोर मैन विल ज्वाइन आफ्टर 20 डेज, यानी वो नेक्स्ट 10 डेज में कितना काम करेंगे? ट्रिपल हो गया मैन 3/21. सो 1/21 प्लस 2/21 प्लस 3/21, ये कब इक्वल टू 21/21 वर्क विल बी कंप्लीट. 21/21 ओनली वर्क कंप्लीट होता है. सो ये 10 20 30 40 50 60, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 is equal to 21. 21/21 numerator equals to denominator, work will be complete. So all of you here in this
अनुभव पेपर, बस एक चीज याद रखना, हाँ पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था, सही था पेपर, आपको डिफरेंट, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर दिस 77 में एम्बिगिटी थी, में क्या था, एम्बिगिटी क्या थी, एरर था, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स एब्सोल्युटली फाइन. So I hope discussion helped you all. So now see you all in the next discussion. See you all in the next discussion, all of you. So कोई क्वेरी होगा, कोई कंसर्न होगा, ऑल ऑफ यू, सो आई हैव गिवन यू ऑल, नहीं होता आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, व्हाट्सएप ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते. या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कोई क्वेरी होगा तो. थैंक यू ऑल. अरे पता है कि